मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का सामान लेना हो या कोई भी चीज करनी हो या फिर किसी से भी बात करनी हो, फंसा नहीं सकते। तो ही इज वेरी टैलेंटेड, उसको दुनिया समझ में आती है, सब कुछ पता है उसको। बट स्टिल ही इज अ बिग फैन ऑफ बीजेपी। ठीक है। हम्म। तो ये जब बात करते हैं ना कि नहीं नहीं बीजेपी आरएसएस ने लोगों को बहकाया है, पीपल आर बीन मिसगाइडेड बाय बीजेपी, आई डोंट बाय दैट थिंग बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। आप लोगों से हम्म। पैसा नहीं निकलवा सकते, आप लोगों को बेवकूफ वो क्या मतलब, क्या जानवर थोड़ी है कि मतलब उनको पास दिमाग है, एवरीबॉडी हैज स्टडीड, एवरीबॉडी आर एजुकेटेड। ठीक है। तो उनके दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल लाइक अस। हम्म। उसको उनको कोई गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अभी कास्टिज्म ओके, मैं इंडिया में तुम्हें है, एक ठीक क्वेश्चन है। पूछता हूँ, सेल्फ एक्सप्लोरर एक क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ तुम्हें। तुम्हारा हाँ जो भाई है ना, वो हाँ। बचपन से इफ एट ऑल ही डिसाइड समथिंग, वो हम्म। करना है तो मुझे करना है, आई हैव टू रियली वर्क हाँ। हार्ड दैट, एंड आई रियली वो माने दुनिया इधर का उधर हो गया, इफ आई हैव डिसाइडेड हम्म। समथिंग देन आई विल डू हम्म। इट, वैसा बंदा है क्या? नहीं है, नहीं है वो वैसा आ, हो। नहीं, नहीं, आई विल वैसा जस्ट बंदा टेल है यू कि क्या। नहीं बंदा है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई विल जस्ट टेल यू द बैकग्राउंड, मतलब उसका नहीं, मैं बताता हूँ इनका सबका, क्योंकि मैं ऐसा बताता हूँ कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोपेगेंडा, दिस इज अ इनहेरेंट प्रॉब्लम। इनहेरेंट प्रॉब्लम है इंडिया की मानसिकता में। एग्जाम्पल कास्टिज्म है, कास्टिज्म कोई आके घर घर में नहीं बोलता जाके कि कास्ट फॉलो करो फॉलो करो, लोग खुद ब खुद करते हैं। ठीक है। देर इज व्हाट आई एम सेइंग इज, problem is with the people. They understand petrol prices are high, they understand vegetables are high, they understand jobs are not there, they understand everything, but still बीजेपी को सपोर्ट करते हैं because they are all Muslim haters. ठीक है। my brother और everybody जनरलाइजेशन है they वो, understand। सेल्फ एक्सप्लोरर, नहीं सर, दैट इज टू जनरलाइजेशन जनरल। नहीं है। No, no, you talk to any person who votes for BJP, any person, women हो not women हो, वो आपको है ना दुनिया भर का नॉलेज बताएंगे, सारा बताएंगे, वो अगर आप प्राइवेट में जाके उससे बात करोगे ना, नहीं नहीं, वो मुस्लिम लोगों के खिलाफ ही उनका जो हेट्रेड है ना, उसके वजह से ही वो बीजेपी को डिफेंड करते हैं। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज अ प्रॉब्लम विद हेट। आप जब आप गांधी जी को पढ़ो, गांधी जी को मानते हो, गांधी जी हैज सेड ब्रिटिश आर नॉट अ बिग बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, कम्युनलिज्म इज बिग प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जो सीड ऑफ हेट्रेड है ना, हेट्रेड इज नॉट अंडरस्टेटेड वर्ड, इट्स जो माइंड में हेट्रेड। एग्जांपल यूएस में आप देखो, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट पे रहते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हेट्रेड। एक कैसा रहता है कि बेस रहता है, बेस कोई किसी भी थिंग का। ठीक है। तो वो बेस मैटर्स, लव और हेट। व्हाई पीपल, एवरी रिलीजन, एवरी talks about love. Love is something not about attraction, it is something about valuing goodness. ठीक है। it is about tolerance. ठीक है। अभी hatred is something, if you are having like hate for Dalits, right, example, so that will come as a casteism. Hate for minorities, so that will come as a revolt, or you end up supporting people of your community, or the people who oppress them. So most of the people understand whatever is going on, but they are only voting because I am saying, because I have not seen a single person in my life who votes for BJP and he doesn't hate minorities. आप वो बात ओवरऑल नहीं दिखाएगा, उसका हेट है ना, वो बाहर नहीं दिखाएगा। दैट हेट विल कम इफ यू नो दैट पर्सन एंड इफ यू गो इनटू डीप टॉक विथ हिम, अल्टीमेटली ही विल डिफेंड एवरीथिंग, he will ignore the things that are done by BJP or everything, but ultimately inherently, that's what I'm telling, that is a big problem in India. So ओके। I certainly don't get when people say like media is misguiding them.
भाई वो बंदों ने इंजीनियरिंग क्लियर किया है, आईएएस क्लियर किया है बंदों ने. पीपल आर आईआईएम पास आउट, आईआईटी पास आउट, देन आल्सो दे आर भक्त. व्हाई? यू थिंक दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? आप आईआईटी के, आप आईआईटी से हो. डू यू थिंक आईआईटी पीपल आर ब्रेनलेस? स्टिल दे सपोर्ट बीजेपी. It is because their inherent problem is within in their themselves. Thank you. ओके, ठीक है. हाय राजवीर भाई. हाय फनी, कैसे हैं? मैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर यू आल्सो. सो क्या चल रहा है आज? आप लोग फनी जा रहे हो? अभी, हाँ मैं अभी देखो 10 बजे मैं कल अपने एरिया में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ फ्लैग होस्टिंग का, अराउंड 10 o'clock इंडियन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम. आवर रेस्पेक्टेड एमएलए नरेश बालन विद मी फॉर दिस प्रोग्राम, एंड लॉट ऑफ पीपल कम विद अस. गुड. तो अराउंड आप 10 लोग o'clock 10 o'clock. तो आप लोग अभी जा रहे हो क्या फ्लैग होस्टिंग के लिए? अरविंद का कुछ है क्या आज? हाँ, अरविंद का तो रहेगा ना. आज वो मॉडल टाउन के जो छत्रसाल स्टेडियम है, जो हाँ. दिल्ली का होता है हमेशा प्रोग्राम, अरविंद वहीं पे होंगे. और बाकी सभी विधानसभा में सारे एमएलए मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाय हाय जेपी सर. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी सभी को. बहुत बहुत मुबारक. पंजाबी में बोलिए आप. हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई जी आजादी दिवस दी 75 थैंक यू, हाँ जी. थैंक यू. सो आपने वो अनंतपुर साहिब में वहीं पे कुछ हुआ है क्या जेपी सर? माने एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डूइंग इट राइट, आई बिलीव. हाँ जी, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਮਤਲਬ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ. ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਨੋਗਰੇਟ ਹੈ, 3:30 ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਨੋਗਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰਿਆ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ. वाओ. सो 1.5 year लाइव स्ट्रीम चाहिए इसका हम लोगों को. बेटर ट्राई कर लांगे बिकॉज मैं तो बिजी हूं ना. सो किसी को कहूंगा कि मिनिस्टर साहब की आईडी तो अगर लाइव स्ट्रीम हो जाए ट्राई कर लांगे. हाँ, आई विल डू दैट. फेसबुक में हो, ट्विटर में, हर जगह पे अगर लाइव स्ट्रीम होगा तो इट वुड बी रियली गुड. बहुत अच्छा होगा. जी जी, आई विल ट्राई करूंगा मैं उसमें. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू. जय हिंद दोस्तों. हाय साजू भाई. जय हिंद, जय हिंद. हैप्पी वंदे इंडिपेंडेंस डे. मातरम. वंदे हैप्पी मातरम. इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू. आपको भी. मैं अकेला हूँ जो वंदे मातरम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने लायक नहीं हूँ अभी. आप सब लोग हो, इंडिया में हो आप सब लोग. मैं यहाँ पे हूँ. अरे Obvious- यार क्या बात कह दी आपने फनी जी. आपके तो दिल में ही इंडिया है ना. फिर भी मैं यहाँ पे एक डिंकी सी घर पे ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के अकेला बैठ के सब कुछ बात कर रहा हूँ. सो माई इंडिपेंडेंस डे इज वेरी लोनली इंडिपेंडेंस डे, बट आई डोंट थिंक योर्स इज. Yeah, there is lot of flag hoisting here going on and आज तक किसी को इंडिया फ्लैग के बारे में पता ही नहीं था. वो वैसे लोग अभी इंडिया के फ्लैग पकड़ के खड़े हैं. यस यस यस, यू आर राइट. बट उन्होंने होस्ट किया क्या इस बार? मैंने 2-3 फोटोज देखा था. There is a campaign going on in Bangalore to hoist the flag. Okay. And yeah, and everybody is participating, which is good. Good. Very good. Hi Select sir. Happy Independence Day. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಣಯ್ ಭಾಯ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Wonderful. I like it. जेपी सर ने पंजाबी बोला हुआ, आपने कन्नड़ा में बोला, एंड साजू भाई आप गुजरात में बोलिए ना. ગુજરાતી માં તો એક જ કહેવાય.
अरे I don't know how to say it actually. लीलू बेन बोलेंगे. Please help. हाँ साजू भाई I think- आप अपना वाले बोलो ना वो कर्नाटक में या तेलुगु में बोलो ना. मैं अभी तक तो इंग्लिश में ही बोलता हूँ. तेलुगु में बोलो ना फणी भाई. స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Very nice. National integration on हाँ आपका news today. yes 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 yes. मैंने आई थिंक पीपल जिसको भी ये धनबीर है क्या यहाँ पे? ये धनबीर असमी में आई थिंक बंगाली में असमी में बोलेगा. ये धनबीर आ is जाओ there. ऊपर. हाँ ओके गुंजन भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इफ पॉसिबल. दिवसनी आप गुंजन भाई सबने आवाज आ रहा है? हार्दिक थैंक यू वेरी मच. थैंक आज यू 8 बजे वेरी उठ मच. गया हूँ मैं वैसे. आज बहुत सारे लोग उठ जाते हैं नोइंगली और अनोइंगली, तो जल्दी उठ जाते हैं. धनबीर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तुम कौन सी लैंग्वेज में बोलोगे? मैं मणिपुरी में बोलूंगा. ओके प्लीज. वेट इंडिपेंडेंस डे की मी लोइद जामना खुरमजरी. यस ये था. थैंक यू मुझे समझ में नहीं आया बट आई लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ओके हाय लीलू मैम. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. Hello, good morning everyone. Azadina Panchoter. क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है. आजादीना 75 વર્ષનો શુભેચ્છાઓ. Probably that's what she's trying to say. Oh, आवाज नहीं आया? फिर से बोलूं? नहीं आया है. फिर से बोलो. Okay. આઝાદીના 75 વર્ષે સ્વાતંત્ર્ય દિવસે તમને બધાને હાર્દિક શુભકામનાઓ. હેપી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. थैंक यू. Happy Independence. Thank you very much. Thank you very much. Oh. Okay, I will not bore everybody. मैं जल्दी से शुरू कर देता हूँ न्यूज के पार्ट एक एक करके. Okay, so today is August 15th and now I think the time is just 5 minutes short of 8:30 now. So these are some of the news. Okay, BJP ruled Municipal Corporation of Delhi MCD is making a mockery of Safai Karmacharis by regularizing only 187 out of 27,098 eligible contractual employees. आम आदमी पार्टी ने बोला है. So अभी ऐसे जेपी सर ने बोला था कि भगवंत मान जी is going to launch 100 आम आदमी पार्टी clinics on the 75th Independence Day. I think 1:30 से 3 o'clock तक के बीच में कभी होगा. It would be really good if we can get some live streaming उसके बारे में. Next comes Gujarat government has sanctioned 550 crores annual package for salary hike of police personnel. The decision comes a few days after Arvind Kejriwal issued to resolve the grade pay issue and the best pay scale for them if Aam Aadmi Party comes to power after the polls. So 550 का कल breakout कुछ दिया था पुनीत भाई ने. I did listen to it, but I think उसको एक टेबल फॉर्मेट में बना के डालने की कोशिश करेंगे हम लोग. Okay, the Power and Public Works Works Minister Harbhajan Singh ETO today
Punjab ka, laid the foundation stone of 2 different projects at Sangrur, 66 kV grid substation costing 9.5 crores to be completed by 31/3/2023 to the benefit of 60k to 70k electricity consumers. A multi-storied state-of-the-art building to be constructed at 33 kV colony, Sohain Road, Sangrur at a cost of 17.3 crore to shift 12 offices of PSPCL Sangrur to one place. This will be completed by 31st March 2024. Armed with the resolute will to provide ration at the doorstep of the people, the Punjab government shall undertake the home delivery service of atta from 1st October this year. Bhagwant Mann government announces resumption of Shaheed Bhagat Singh State Yuva Award, which was lying defunct for long. Also to renovate and revive the Yuva Bhavan building at Chandigarh, a cost of around 3 crores has been allocated. Aam Aadmi Party will contest Adampur by-election in Haryana. Anurag Dhanda has announced Adampur seat remains vacant after Kuldeep Bishnoi, वो कांग्रेस का है, उसने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किया. So Adampur by-election Aam Aadmi Party contest कर रही है. This is a very welcome step. We all are expecting that Aam Aadmi Party करेगी. And personally speaking, I want Aam Aadmi Party to now contest in all the elections, even if it is the smallest election. हर election को हमें contest करना ही पड़ेगा, even if it is an election in universities also. Arvind Kejriwal uses Modi's manual to tackle PM. AAP can no longer duck a straight fight with the BJP, and PM's revdi remarks provided the opening Kejriwal needed. ये recently एक article में आया था कि the way इंडिया में अरविंद केजरीवाल को प्रॉप अप कर रहे हैं, डेक्कन हेराल्ड की आर्टिकल है ये, इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल इज यूजिंग मोडीज मैनुअल टू टैकल द पीएम, एंड उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक्चुअली इट इज वर्किंग. एवरीबडी थॉट दैट इट मे नॉट वर्क, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट नीतीश कुमार एंड एवरीबडी, बट एक्चुअली द बैटल इज बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड नरेंद्र मोदी, ऐसा इन्होंने बोला है. एंड मोस्ट ऑफ द बीजेपी इज वेरी अबाउट दैट पॉइंट, दैट पार्ट इट सीम्स. And internally, the Gujarat experiment is really working well for Arvind Kejriwal. And last में इन्होंने ये लिखा है कि it didn't look as if it's a sudden thing, and Arvind was playing this kind of politics from 2012 onwards, but nobody gave notice to him. But now people are giving notice to him because he's not only adding political innuendo, he's adding the work ethic also. ऐसा बोल रहा था वो. Okay, so we are not able to meet the expectations of our embedded news channels, which want immediate clearance of all the dues and fresh advertisements of the same volume. We neither have the money to pay the dues at once or to release big advertisements this financial year. The Uttar Pradesh government has given an advertisement of hundreds of crores to news channels in 2021 in the hopes that the media will inflate its deeds before the 2022. But now it seems that the Yogi government is unable to pay its dues. So basically, क्या हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने 2022 की इलेक्शन से पहले he has actually in a blitzkrieg he has spent something like 1024 crores कुछ खर्च किया था, and he didn't even pay that amount to the news channels, and those news channels are now asking the Uttar Pradesh government कि pay the dues. आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट हैज पेड 488 crores कुछ तो रखा था इस साल एडवर्टाइजमेंट में, and they have already paid most of the amount it seems. So टेलीग्राफ इंडिया में ये आया है कि why आम आदमी पार्टी poses a bigger threat to BJP. I think everywhere it is happening. पंजाब गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, okay, so कल जो MLAs का लॉ पास किया था पेंशन, there are around 300 former MLAs in Punjab saving of around 19.53 crore per annum. Aam Aadmi Party has raised the issue during the last government's tenure. So Aam Aadmi Party to launch तिरंगा संकल्प यात्रा in UP from today. UP में हर एक जिले में ये तिरंगा संकल्प यात्रा भी शुरू होगा.
Bhagwant Mann government takes a major decision to make basmati rice export worthy. Issues direction to stop the scale, stock, and distribution of some insecticides in the state, which is a constant in the export of basmati rice. Abhi basmati rice ki what they say it is how we are calculating the amount of basmati rice and how basmati rice को छेलना कुछ बोलते हैं, export वर्दी बनाने के लिए पूरा they are going to create a whole एक committee बना रहे हैं, and he said that there are so many insecticides, acifite, buprofizin, chloropyrifos, methamidophos, carbendazim, इन सभी को वो राइस के अंदर पूरा देखेंगे बासमती राइस के अंदर, और गुड क्वालिटी राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए रेसिडुअल इफेक्ट कुछ नहीं होगा, वैसा काम करने के लिए दे आर गोइंग टू क्रिएट ए विजिल. एक्चुअली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कुलदीप सिंह दलीवाल ने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिया कि वी नीड टू मेक श्योर द MRL वैल्यूज जो भी होता है बासमती राइस का, दे शुड बी एडहर टू बाय हुक और बाय क्रुक, उसने बोला था. Okay, pensions to needy. Punjab to hold camps en masse on August 17 to ensure no beneficiaries left out. Baljit Kaur ने बोला है old age pension, widow pension, dependent children's pension, disability pension, disabled person pension is rupees 1500 per month. Under these pensions, 30,67,927 beneficiaries are getting benefits at present. An amount of 460 crores has been released by the Punjab government as pension for the month of July 2022. En mass में ये pensions दिया जाएगा it seems. फिर उसके बाद पंजाब में steps would be taken to promote technical solutions to the replacement of coal with straw-based fuel pellets in industrial applications. This will not only reduce the emission load but will also create employment opportunities by generating market forces for setting up pelletization parks. Meet Hair ने बोला ये. So Arvind Kejriwal is going to visit Kutch area in August 16th. Kejriwal is likely to attend a town hall meeting. Kejriwal might announce another guarantee. So सिसोदिया ने अभी मनीष सिसोदिया ने entrepreneurship business classes को private schools के लिए भी he has extended it. He said it will boost the entrepreneurship of Delhi schools. Okay, India Inc का one of profits have fallen off record high in April-June quarter. Earnings are lowest in 4 quarters. Sales बहुत surge कर रहे थे. Overall corporate earnings in the quarter were down sharply from their highs in financial year 2022. Okay. So एक न्यूज देखा था मैंने, ओरिजिनल शिवसेना माने द शिवसेना बिलोंगिंग टू मिस्टर क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे एंड भारतीय जनता पार्टी विल contest the forthcoming elections to civic bodies in Maharashtra together, and CM Eknath Shinde will head the rebel faction. It seems उन्होंने बोला है कि he is not going to contest the BMC elections. वो contest नहीं कर रहे. Basically उसने तो जीत लिया ना, so he is not going to contest it since. Almost 2/3 of the country's population resides in the rural areas, and yet only 33% of the total health workers and 27% of the doctors are available. Related ये डेटा आया था Business Standard में. They said that India is facing a huge shortage of doctors in the rural areas. इसका कुछ डेटा चाहिए मुझे, स्टैटिस्टिक्स में आया था ये. फिर इसके बाद अभी एक नया लॉ आया है SEZ के लिए. कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड होस्ट ऑफ incentives. Said the Commerce Ministry has sought different ministries including finance on the new bill. इसके तहत zero rating, retention of zero rating of
integrated goods and services tax on domestic procurement by a unit in an SEZ, continuation of indirect tax benefits to developers of these zones, and allowing depreciation on sale of used capital goods cleared to domestic tariff areas. ये सब चीजें extend करने वाले हैं, and also they are going to extend a 15% exemption on corporate tax rate on all the SEZs अभी. Government on July 1st levied rupees 13 plus per liter additional excise duty on fuel. इसके कारण windfall profit tax कुछ आ रहे थे. The rupees 6 a liter tax was also imposed on petrol and ATF exported out of India. So इसके कारण oil refineries इंडिया में जो है ना उनको windfall energy profits हुए हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज को है और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज को ये प्रॉफिट्स हो रहे. Okay, so currently the value of exports and imports of services is released by the Reserve Bank of India and it comes with a lag of over 2 months. एक प्रॉब्लम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से it is going to look into it. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday advised people to avoid visiting the river banks after Yamuna's water level touched the danger mark of 205.33 meters. FMCG companies also expect volume decline to continue in the rural side but see some stabilization in the business and the recovery in demand starting from the third quarter of financial year 23. Finance Ministry is proposing to soon revive the exempt-free tax regime with a view to making more attractive for individual income tax payers. Okay, so FPIs, foreign portfolio investors have invested 22,000 crores in Indian markets in August as inflation concerns have softened. So there is a higher net of 5,000 crores by foreign FPIs in the entire month, bola tha. Railway board has suggested penalties and infrastructure improvement to lower rack congestion. इसके कारण the charges levied for excessive detention of a baggage due to delays in loading or unloading इसके ऊपर आपको you are going to get penalized. Okay. एक और बिजनेस स्टैंडर्ड में आया. डिस्पाइट आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश foray, state headed for a bipolar election in the 68-member BJP ruled assembly. Political scenario in Himachal Pradesh seems so far largely bipolar. There may be some places where Aam Aadmi Party can make some dents, especially to the place which is pretty much nearer to Punjab. So ये आर्टिकल में they have asked Congress and BJP दोनों को पूछा था उन्होंने. BJP is now running a slogan called Mission Repeat under the name of Prime Minister Narendra Modi, and the Congress is in the foray in the absence of mass leaders. Veerbhadra Singh of the Congress and Prem Kumar Dhumal of the BJP are out of the scene. Singh is dead while Dhumal is virtually in political exile after his defeat in the previous assembly elections. Abhi Congress has appointed three-time MP Pratibha Singh, the widow of Veerbhadra Singh, as the state unit president in April, and Himachal Pradesh mein BJP is going to fight under the leadership of Narendra Modi. Congress is banking on its promise to bring back the old pension scheme that will benefit 225,000 employees, a crucial vote bank. Like in Rajasthan and Chhattisgarh, we will introduce the OPS scheme if we are voted to power, Pratibha Singh ne bola hai. But education scam hai, deteriorating law and order hai, rising debt hai, government in the dock relating to corruption hai. फिर इसके बाद constable recruitment paper leak that was sold for rupees 6 lakh to 8 lakhs. इन सब चीज के बारे में कोई भी बोल नहीं रहा. आम आदमी पार्टी is taking up the cases but they don't have the organization. ऐसा कुछ business स्टैंडर्ड में बोला है. ओके
Okay, so in a first, an indigenously developed howitzer gun 80 AG is part of the 21 gun salute during Independence Day ceremony at Red Fort. रेड फोर्ट अभी दूसरा है कि passport officer has authority to make any kind of corrections. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बोला है. And B Chandrasekhar JS Aulak gets President's Police Award. अभी एक और न्यूज आ रहा है पंजाब से कि पंजाब गवर्नमेंट इट सीम्स इज टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू फेक आयुष्मान योजना बेनिफिशियरीज. illegal beneficiaries of Ayushman Bharat Mukhyamantri Sehat Bima Yojana have allegedly received treatment costing several lakhs of rupees through fake cards. However, the state government has reportedly turned a blind eye to the biggest scam of its kind. It has learned that the bills based on fake cards had been cleared by the government. Many fake beneficiaries has undergone hip and knee joint replacement surgery. Just to add, this all happened in the Congress time. अभी जो नया गवर्नमेंट आ रहा है, it is not actually issuing any new beneficiaries, क्योंकि the new government is coming up with a new policy where mohalla clinics ho, polyclinics ho, and every kind of health services should be free. वो एक पॉलिसी लेके आने के लिए कोशिश कर रही है. Tribune has discovered a case where a non-resident Indian ineligible beneficiary has allegedly got heart-related treatment costing rupees 2 lakh from a private hospital in Patiala. Ironically, some senior health officials were reportedly involved in the scam. Despite regular complaints by the genuine beneficiaries, senior officials had been ignoring the misuse of Ayushman scheme since long. Ajay Sharma, Principal Secretary, Health and Family Department said, we will be conducting a random checking of the claims made by the hospitals in the coming days. Therefore, we will take action against those found guilty. फिर उसके बाद लंपी स्किन डिसीज के लिए 1.84 लाख कैटल वैक्सीनेटेड है. अभी पंजाब में बहुत ही फास्टली चल रहा है, बट इट्स स्टिल डिलेड. एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि दे शुड हैव डन इट एटलीस्ट 1 वीक बिफोर. अभी बहुत ज्यादा फैल गया इट सिम्स. फिर उसके बाद पटियाला बैंक हेस्ट था 11 days after a minor walked away with 35 lakh. Cops have recovered 33.5 lakh. रिकवर किया था. 35 लाख लेके वो भाग गया. एंड अभी 11 days में कॉप्स हैव रिकवर्ड 33.5 लाख वहां पे. ये पंजाब पुलिस मध्य प्रदेश की राजगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पे वो छुप गया था बंदा. वो जगह गए थे, उसको पकड़ा था. पटियाला एसएसपी दीपक पारीक said that the accused trio hails from Khariar village in Rajgarh district of Madhya Pradesh, and a CIA team led by Shaminder Singh conducted a raid and recovered the booty. The people identified were Ritesh, Krishnan and Rajesh, who planned the haste and trained the child. Identity not revealed. While one suspect accompanied the child, another ensured that the money reaches the village safety. So उनको पकड़ा गया. World Punjabi Organization is taking a march today in Delhi. इसका राज्यसभा मेंबर है headed by विक्रमजीत सिंह सहाय. उन्होंने 75th पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एट इंडिया गेट संडे को कर रहे मींस यस्टरडे किया था. और कैंडल लाइन मार्च वाज टेकन आउट बाय प्रोमिनेंट पंजाबीज इंक्लूडिंग MP Hansraj Hans, actor Divya Datta, former MP Trilochan Singh, KL Ganju, Justice Kuldeep Singh and HS Kohli. This really tragic to remember that over 15 million Hindus, Sikhs and Muslims were displaced during partition in 1947, said Sahai. British officer Cyril Radcliffe, who was given the responsibility of drawing the line, had never visited India before and had no idea on India's sensibilities, and just finished his job in 3 months. Gaurav, you have any news which you can add?
हाँ थोड़ा नया सी पर एक मैंने वैसे लगा रखा है, एक आर्टिकल है एंड एक माइकल बेरी का ट्वीट है। माइकल बेरी कह रहा है कि फिबोनाची जो सीरीज होती है उसमें 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ही पार कर गया नैस्डैक, तो उससे के बाद मेजर गिरावट आ सकती है। और जो मेरा दूसरा ट्वीट है वो डेट के ऊपर है। इंडिया करंट डेट दिस फाइनेंशियल ईयर में काउंट हुआ था वो 152 लाख करोड़ है, which was increased by 17 lakh crore from the last year. तो इनको इतना डेप्ट मतलब कवर करना और जो 4 लाख करोड़ का पहले क्वार्टर में डेट हो गया वो अलग है। बहुत डेट है। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 7 हाइड्रोजन यूनिट्स बेचेगी, मोनेटाइज करेगी। they are selling their entire ownership of गुजरात रिफाइनरी, जिसमें 70,000 टन पर ईयर का हाइड्रोजन जनरेट होता है। गुजरात का है तो पता ही होगा कि किसको मिल रहा होगा। आई एम 100% श्योर कि अदानी खरीदेगा। यूरोप की बॉन्ड रैली रिस्क में आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बिटकॉइन $25,000 को पार कर गया। गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो वंस। मेटा, फेसबुक मेटा विल पार्टनर विद डोरडैश। ये यूके का एक सामान पहुंचाते हैं, तो उनके साथ इन्होंने टाई अप किया। अरामको को इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, उनको $48 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। यूएस ने अप्रूव किया क्लाइमेट बिल, आने वाला है कुछ ही टाइम में। ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को लेकर है। तो मैं यूएस का इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी ईवी को रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं ना, वो हमको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वर्ल्ड को ओवरऑल, क्योंकि ईवी जो है वो पोल्यूशन घटा सकता है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। एक और बड़ी न्यूज़ थी कि कुछ साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने फ्यूजन रिएक्टर को सक्सेसफुली चलाया है एंड दे आर नाउ मेकिंग अ कमर्शियल, they now trying to make a commercial fusion reactor. If it is successful तो एनर्जी फ्री हो जाएगी, लाइट फ्री, सम ऑल थिंग्स विल बी फ्री, क्योंकि फ्यूजन जो है सबसे साफ और सबसे फ्रीएस्ट ऑफ सोर्स हो जाएगा एनर्जी का। चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। कई सारे उनके जो बिल्डर्स हैं, दे आर नाउ, हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, कंटिन्यू। मैं बस कुछ न्यूज़ देख रहा था। ओके। चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। कई सारे उनके जो बिल्डर्स हैं, बैंक्स आर रियली इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन इन चाइना इट सीम्स। बैंक्स का they don't even know, they can't close those banks because the military regime is not allowing you to do it, and deposits भी बहुत गंदा हो गया। चाइना में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, but I think they can run it through, that's not a big deal। इशू तब होगा जब ये बॉन्ड के पेमेंट करना बंद कर देंगे। जो डेट पेमेंट होती है, जैसे एवरग्रांडे ने डिफॉल्ट कर दिया था, अगर वो करना शुरू कर दिया चाइना ने, कई सारी और कंपनियों ने, तो बहुत मेजर एक स्लो डाउन आ सकता है। चाइना ही नहीं, सब जगह ही आ जाएगा, क्योंकि चाइना पे काफ़ी सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है। उबर ने अपनी जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो शट डाउन करने वाले हैं। 2018 में शुरू किया था, अब शट डाउन कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना न्यू वर्जन ऑफ ऑफिस ऐप निकाला है। गूगल अपने यूज़र को कह रहा है कि अपने होम ऐप एक्सपीरियंस को रीडिज़ाइन करिए, हमें बताइए कैसे करना चाहिए। ये तो तुमने बता दिया एफपीआई का इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। हाँ, एफएमसीजी जो मार्जिन मनी है ऑन डिफरेंट कंपनीज, इन्फ्लेशन की वजह से वो बहुत कम हो सकता है। तो एफएमसीजी जो है इस बार इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया था, तो हो सकता है कि उसमें अब डाउनफॉल आए। सेल्स इंक्रीज किया बट प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हुआ है ना। सेल्स बहुत इंक्रीज हुआ इस साल, इस बार इस क्वार्टर में, बट दे डिडंट गॉट गुड प्रॉफिट्स।
नहीं नहीं हुआ है बट बेस ही लो था ना। हाँ जब बेस बेस ही लो लो है था। तो दिखाएंगे ईयर ऑन ईयर कि जी मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, तो वो है, वो काफी है दिक्कत। अच्छा बिटकॉइन ये तो हो गया, ठीक है। अभी तो यही है न्यूज़, क्योंकि शेयर मार्केट बंद था तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है इकोनॉमिक वाइज। Okay, okay. Prime Minister Narendra Modi has given 5 pledges to the country actually to move forward with bigger resolves and resolve of developed India, independence in its truest sense, respect India's rich heritage, unified India and a sense of oneness. Citizens should act responsibility. इसमें एक भी वो करता नहीं है, क्यों बोल रहा है ये सब कुछ? He also said that नारी शक्ति की बहुत सपोर्ट करनी चाहिए इंडिया में. He said, and then आजकल even toddlers nowadays do not want to play with imported toys. India gradually becoming a manufacturing hub, be it electronic goods of mobile phones or anything. इंडिया में स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा सक्सेस हुआ है कि अभी startups have been driven by youth from tier 2 and tier 3 cities. Nature a pivotal part of India's heritage. We already have traditions and practices that will help in combating climate change लिखा था. And India is now the mother of democracy and India's diversity is its strength. ऐसा ये सब चीजें उन्होंने बोला है. I have no idea why he's saying all these things. Okay. Higher cost pressure Mars. ये मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ गौरव, ये एक बार पढ़ो ये का. With softening commodity prices and increasing consumption, analysts expect the overall corporate performance to improve in the second half of the fiscal year. The aggregate revenue of a sample of 2,638 listed companies, excluding the banking and finance firms, increased by 4-quarter high of 41.5% on year on year in April June, but growth in net profit was at 4-quarter low of 15.1. Aggregate performance came in below expectations due to miss in some of the heavyweights like Reliance Industries, Tata Motors, and he said the spread of earnings was however better in 70% companies. माने raw material costs have actually expanded hugely बोल रहा है, but the profits को हम लोग जितना भी expand करना चाहते हैं तो वो expand नहीं हो रहा है. Operating margin भी drop हुआ है 310 basis points पे 13.9% year on year पे. ऐसा कुछ बोल रहा था वो. अच्छा गौरव नहीं है. Okay, so I have this much only. आपके पास कुछ है? You want to talk about anything? Junjunwala passed away, no? Was that covered?
Yes, you are audible. Funny. पता नहीं, मुझे बहुत ग्लिच हुआ आज, समझ नहीं आया मुझे. I had to actually switch off my cell phone and switch on my cell phone. मेरा सेल फोन भी काम नहीं कर रहा था. I don't know what is happening. हाँ साजू भाई, आप कुछ बोल रहे थे. हेलो. अरे कुछ ग्लिच हुआ था यार, मेरा आवाज ही नहीं आ रहा. हाँ मेरा भी एक्चुअली आई एम टॉकिंग बट मैं ऑन ऑफ भी नहीं कर पा रहा हूँ. सब तो समथिंग इज रॉन्ग. आई हैड टू स्विच ऑफ माय सेल फोन, स्विच ऑन करना पड़ा. बहुत सारी चीजें हुए थे. Okay, the Labor Ministry may allow the use of funds lying with the government for paying the worker contribution under the Pradhan Mantri Shram Yogi Manthan scheme, a major revamp of the voluntary pension program for unauthorized workers. Senior government official told ET that the Labor Ministry is contemplating using funds collected under the Building and Other Construction Workers Act 1996 for this. The proposal came after enrollments under the scheme slowed down considerably since the outbreak of pandemic, as unorganized workers stayed away from contribution to the scheme. The number of beneficiaries in this scheme, वो Building and Other Construction Workers Act के अंदर सेस में 78,000 crores है. So far 35,000 crores ही यूज हुआ है. बाकी के 35 plus 8 43,000 crores यूज नहीं हुआ है. उसके अंदर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एज ऑफ अगस्त 10th 48,44,019 वर्कर्स है वहां पे इसके अंदर. So now they are going to use this act के अंदर जितने भी पैसे हैं वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन स्कीम में ये लोग पे कर रहे हैं. आपको तो सबको तो पता है कि अभी अटल पेंशन योजना विल नॉट बी, इनकम टैक्स पेयर्स कैन नॉट बी यूजिंग अटल पेंशन योजना. आपको पता है? No, I did not know that. हाँ, अटल पेंशन योजना from October 1st, no income tax payers can use that. I remember that जब अटल पेंशन योजना लेके आए थे, they said it is going to be a game changer, master stroke होगा, but slowly, surely they are dwindling the utilization of it. Anything else? आज कुछ बड़ा घोषणाएं नहीं हुए रे इंडिपेंडेंस डे के लिए. वो 100 लाख करोड़ का होगा ना घोषणा. अभी तक स्पीच खत्म हो गया क्या? तो 100 लाख करोड़ का उसका हो गया ना स्पीच. ओ पता नहीं, वो हर बार करता है 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़. हाँ बट इस बार 100 लाख करोड़ तो सुना ही नहीं. नहीं इस बार सुना नहीं. ये आज उन्होंने नारी शक्ति के बारे में बोला. He said that India has to fight poverty बोला. फिर उसके बाद परिवारवाद. हे भगवान, ये परिवारवाद सुन के मेरा दिमाग खा गया. Raised concern over परिवारवाद. उसकी पार्टी के अंदर है परिवारवाद. Says there were some people concerned about protecting their ill-gotten health. और उन्होंने बोला है कि फेडरल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं. एंड ही सेड दैट ही विल वर्क हार्ड टू मेक ए यूनाइटेड इंडिया. वही बोला था उन्होंने. बनी भाई, ये पेंशन के बारे में कर्नाटका में our revenue minister made a statement 4-5 days back that if you don't withdraw your money for more than 6 months after giving you the pension, आवाज नहीं आ रहा. means you have got sufficient. If you don't withdraw your pension for more than 6 months, कुछ तो ग्लिच चल रहा है. साजू, you know that? No.
साजू भाई, you know that? एक मिनट, मैं सर्च कर लेता हूँ. नहीं, उनका कुछ ग्लिच हो रहा है. Let him come and speak. I don't know about it. I think they're trying to put a deadline on withdrawals. Hello. Yeah, go ahead. Funny, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Yeah. I have a question for Leelu. She's from Gujarat. How's the mahal in Gujarat? Yeah, let's park that question. Silek sir, can you go ahead with your news? Saju bhai, what I was trying to say is, Mr. R. Ashok, the revenue minister, अभी 4-5 दिन पहले कर्नाटका में अनाउंस किया, if you don't withdraw your pension for 8 to 9 months consecutively and it is just lying in your account, your pension will be stopped. He wants you to use the money. The inference is basically, if you are not withdrawing your pension, you are sufficient enough to live your life. I don't know what logic these people are trying to do. If I do the postmortem, what I understand is government doesn't have money to pay these people. दोस्तवाद में देके खत्म हो गया है पूरा एक्सचेकर. उसको बचाने के लिए these people are coming up with nonsense ideas and nonsense theories, which they don't even understand what is going to be the repercussions of what they are trying to say. Yeah, I haven't heard that news, but that's true. That intention doesn't seem correct. I know many people with pension who are not able to get their pension because of change of address and all that. No, I'm not talking about that, Saju bhai. I'm talking about if you don't withdraw the pension from your bank, they want you to use that money. You cannot just see. My mother lives with me. She gets her pension. Why will she withdraw? I am taking care of her.